past 4 years, under the leadership of Dr. Sumesh, Dr. Richa and Dr. Parul and Mr. Soni, obviously, we have succeeded setting up several high-quality IVF labs. You know, when you speak about IVF labs, it's like you go to a restaurant. The kitchen is extremely important, and the laboratory is our kitchen. So it is extremely important to have a good cook and a great kitchen. Now you might say, why are you talking about kitchen and cook? Because this is a similarity which is extremely important. You see? The other important point is, you know, IVF and reproductive health is a very virgin field of medicine. If you go to any physician, if you go to a cardiologist, if you go to any physician, these sciences have existed for centuries, if not millennia. It means the experience that we have gained over the past hundreds and thousands of years have taught us how to treat these patients. Now, if I would ask you, how old is reproductive health? What we do? It's 45 years. It's 45 years. It means, compared to other specialties, we have a huge lack of scientific knowledge. You can imagine hundreds of years, if not thousands of years, compared to 45 years. It's very limited. And what we have done in the past is copy-pasting the research that we have done in Europe, in the US, or somewhere else. But we have learned by working in different parts of the world, there is something which is called geography and infertility. You cannot replicate a patient from Mumbai, Delhi, Chennai, Hyderabad, Ahmedabad, or somewhere else with a patient in Frankfurt, Munich, or Paris. You have different genetic predisposition. You need to have a personalized treatment. And that is... I agree with Dr. Fatemi that what we do requires collaborative effort between the embryologists and the physicians. Now, from our side, the embryologists, we need to first use technology. Second, we need to modify our protocols in order of finding a way to improve the outcomes so that we give the doctors the embryo with the highest chances of pregnancy. Now, in India, we use the same standards that we use, whether it was in our clinics in UAE or our partners in Europe. So we have raised the bar, I think, in India when it comes to embryology with the technologies that we have. We have taken advantage of all the scientific research that we've done to implement them and incorporate them within our SOPs, our protocols in the lab. मैं infertility की बात करूं, you all know that the chances of getting a pregnancy is reducing. Infertility का chance increase हो रहा है हमारे population में. क्यों increase हो रहा है? हम ये सोचते हैं क्या? क्योंकि हम child bearing age में बहुत सारी और चीज़ें कर रहे हैं. स्टडीज़ हो रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दिया जा रहा है, ट्रैवल प्लान्स बनते हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी का एक पोर्शन है वो इग्नोर हो जाता है. अगर हम फर्टिलिटी को इग्नोर करते हैं, और ये एक टाइमलाइन है, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कंटिन्यूसली टिक कर रही है, और वो टिक करती रहेगी, वो हमारे लिए वेट नहीं करेगी. तो इसीलिए प्रेगनेंसी का चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि मेनली वुमेन की एज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्रेगनेंसी होने के चांसेस में. जैसे आप देखेंगे कि फर्टिलिटी के चांसेस कम हो रहे हैं, वैसे ही आप देखेंगे फर्टिलिटी क्लिनिक्स के नंबर बहुत बढ़ रहे हैं. अगर आप आज के दिन में मुंबई में देखें तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स पता चलेंगे फर्टिलिटी के, लेकिन क्या वो सभी स्टैंडर्ड काम कर पा रहे हैं? क्या उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम एक लाइफ को बाहर लैब में क्रिएट कर सकें और सक्सेसफुली इम्प्लांट कर सकें? क्या हम वो साइंटिफिक जो फिजियोलॉजी है उसको समझ पा रहे हैं? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. हर कोई एक गाड़ी ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, लेकिन उसमें कितनी साइंस, कितनी इंजीनियरिंग, कितना अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और ये हमारे ART क्लिनिक्स का मेन चीज़ है कि हम साइंस और नेचर को संग में लेके आगे चलते हैं. तो जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है पेशेंट्स को, वो वर्ल्ड क्लास मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है, और उससे उनके प्रेगनेंसी रेट जो है वो हाईएस्ट है. ये चीज़ अवेयरनेस हमें बढ़ाना है कि प्रेगनेंसी डिले नहीं करना है लोगों को, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. किसी भी तरह का डिजीज़ होता है ना, तो उसका सिम्टम होता है. अगर आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है या एग्स का नंबर कम हो रहा है, इसका कुछ सिम्टम नहीं पता चलता है, तो ये साइलेंटली क्रीप इन करता रहता है
और ये चीज़ पेशेंट्स को पता होना चाहिए। तो हमारी तरफ से हम अपना काम करते हैं, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी तरफ से ये अवेयरनेस बढ़ाएं पॉपुलेशन में, जिससे ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ के क्लिनिक्स को अप्रोच कर सकें, जिससे सही समय में वो प्रेग्नेंट होने का चांस ले सकें। तो बेसिकली ऑलमोस्ट आपको भी समझ में आ गया होगा कि आईवीएफ ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट केवल एक अच्छे क्लिनिशियन या एक डॉक्टर के केवल बस की बात नहीं है। सो आईवीएफ एक पूरा कोलैबोरेटिव ट्रीटमेंट है, एक हाथ की तरह है जिसमें अलग अलग उंगलियां अपने आप में शायद कुछ नहीं कर सकती है। तो ये ट्रीटमेंट में ज़रूरी है कि हम एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे लैब, एक स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट और साथ ही साथ में एक अंडरस्टैंडिंग पेशेंट के साथ में वर्क करें, तभी हम लोगों को अच्छा आउटकम मिलेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पर जो भी पेशेंट आता है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले उनको समझें, फिर उनको ये समझाएं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या एविडेंस है, क्या साइंटिफिक रेलेवेंस है उनकी प्रॉब्लम का, इनफर्टिलिटी को लेके, और उस बेसिस पे उनके ट्रीटमेंट को फॉर्मुलेट करें। एंड उसके बाद में जो बेस्ट पॉसिबल मेजर्स या साइंटिफिक टूल्स है उनको यूज़ करके उनके लिए बेस्ट पॉसिबल सक्सेस या आईवीएफ आउटकम निकालने की कोशिश होती है। और यही हम लोग का लगातार एक एफर्ट है कि जैसे जैसे साइंस एडवांस हो वैसे वैसे हम अपने ट्रीटमेंट्स को एडवांस कर सकें, ताकि हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपने पेशेंट को ART फर्टिलिटी क्लिनिक्स में प्रोवाइड कर सकें। There could be a level on communication between embryo and endometrium. There could be a problem with the systemic progesterone levels. There are a lot of issues that need to be addressed. So saying sperm good, egg good, uterus good, all good? No, it's more complicated than that. I think you had one question. The translation in English is maturing the oocytes outside of the body. So normally, when we do a normal stimulation, we give the hormones, we follow up with we give hormones and we follow up with the hormone levels, systematic levels. We look into the follicle size, we decide, okay, now the oocytes are okay. We give something called a trigger shot. 36 hours, 38 hours after this trigger shot, we collect these oocytes, right? Our aim in the standard stimulation, it is to get oocytes at a stage called metaphase 2 oocytes, which is referred to in simple terms, mature oocytes. The IVM is completely different. The IVM, purposefully, we will collect the eggs at a small size. So I want to collect them when they are immature oocytes. Why? Because I want to add the hormones, I want to add the nutrients, and I want to do this maturation process in the lab. Now, this solution was proposed initially for mainly two types of patients. Patients who are suffering from PCOS or OHSS, at risk of OHSS, which is a dangerous condition. And these patients, they have many eggs, and 10 years ago, when they used to collect and do the transfer in the same cycle, they can develop this OHSS and even die. So one of the solutions for these was to give less hormones so that they don't develop, to avoid this OHSS. The second type of patients are oncology patients, who they need to start a treatment very soon, and there is no time to wait for a full cycle. So you give a couple of days of hormones, they collect the eggs when they are small. Now, in our hands, we can do that, but we have solution for both that doesn't require the IVM. Of course, the IVM will never be as good as a normal stimulation, right? But we are using the IVM to treat completely different population. A population that, as per my knowledge, there is no clear treatment plan for them, which are patients that they have what we call empty follicle syndrome. So these patients, you see